Hello students, welcome to LPS NLP digital channel. Here I am with a video of business studies for class 11th from chapter 1. This chapter contains the concept of business and evolution of business. If for understanding the business studies meaning, that this subject is giving us the information, knowledge about the business activities. And when we talk about the word business, then one can understand it very easily, that opening the shops, selling the goods, bringing the goods from one manufacturer to other, selling it for a profit and making it with a growth size, converting it into huge size business. Business is not a very uncommon word. It's very popular and very common word used by every person in the world. But when we understand this subject, then there is a deep information, knowledge about this content. First of all, before starting the meaning of business, I would like to throw a light on economic activity. You know, when we are a social being, we are living in a society, we have to earn money, income for earning our livelihood. And in that case, we are pursuing few activities with which we can earn income. Like if a person is running a restaurant and selling food is only for earning profits. If a person is running a factory and manufacturing a parts of electronic item and selling it to the other business owners, so he is also engaged in this process. Only the purpose behind every activity is that earning income. So the activities in this whole society performed by the people for earning the profit, for earning income, is coming under the category of economic activity. And each one of us needs money, income. That is why we all are engaged in this economic activity. But we cannot ignore non-economic activities also, because we are a social being. So when we work for the social satisfaction, when we perform activities for helping others, for giving the satisfaction to our feelings, they are coming under the category of non-economic activities. They are not calculated in terms of money. Like cooking food by mother at home, teaching of our child at home by the parents, and the treatment given by a doctor to his own family is not calculated in terms of money. That is why they are covered under the category of non-economic activity. I have not mentioned the name on this board of non-economic activity. The reason being, because we are studying the concept of business. Now we can start with understanding the concept of business. Business is a type of economic activity. It includes, first we have to go for these words. We'll read these words, we'll understand these words. Business includes purchase, it includes production, it includes sale or exchange of goods and services. Purpose is earning profit and satisfaction of needs of the people. अब टर्न आती है कि गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं, क्योंकि पूरे बिजनेस में हम गुड्स वर्ड बोलेंगे और फिर सबको समझ नहीं आए, तो बेटर है पहले गुड्स को ही क्लियर करते हैं. गुड्स इज कंजम्पशन गुड्स, व्हाटसोएवर वी आर यूजिंग फॉर आवर डेली livelihood, or when we earn our livelihood we are consuming so many goods. We demand products
and these products are the part of our, they are covered under the category of goods like shoes, pen, pencil and e-tables. These all covered under a category of goods. And the services are the facilities which are provided for entertainment, for comfort, for traveling, for safety purpose. So we get the services of banks, insurance and railways, airways. These all are the services provided to the people, and the purpose behind it is earning profit. अब फिर से आते हैं हम मीनिंग ऑफ बिजनेस पर. पहली लाइन है बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ बिजनेस, और दूसरी लाइन है बिजनेस इज डिफाइंड एज द एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, देन सेल और ट्रांसफर, or can be used as a exchange of goods and services with the purpose of earning profit for satisfaction of needs of the people. इन सभी चीजों को मिला के बिजनेस होता है. अब सिर्फ अकेला परचेज करेंगे तो सेल नहीं करोगे तो भी प्रॉफिट तो आएगा नहीं, इसलिए बिजनेस इनकम्प्लीट हो जाएगा. और प्रोडक्शन कर लोगे फिर सेल और एक्सचेंज नहीं करोगे, और अगर सेल और एक्सचेंज भी कर लिया लेकिन उसमें एक्स्ट्रा मनी नहीं कमाई, प्रॉफिट्स नहीं आए, तो भी कोई बिजनेस नहीं है. इसलिए बिजनेस में सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं. नाउ दिस कैन बी मोर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स indicate the features of that particular word. Word is business and its characteristics are various which are taken from its define. First is economic activity. I have mentioned few keywords with which you can understand and learn this particular concept. Remembering is the main important aspect of this subject. So for that you have to underline the keywords from your text and always take help of these words to explain these points. Economic activity is always backed by earning profits. And what is profit? Profit is the amount which is excess of income over the expenses or expenditure. जितना पैसा आप एक्स्ट्रा लोगे अपने खर्चे से निकाल के, वो आपका प्रॉफिट होगा. देन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और गुड्स को, रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. रॉ मटेरियल को सेमी प्रोडक्ट्स में फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. सो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स. थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. रेगुलर वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम रोज करेंगे वही हमारा बिजनेस होगा. एक बार की हुई एक्टिविटी जिसमें हम अर्निंग करते हैं, दैट इज नॉट अ बिजनेस. लाइक सेलिंग ऑफ ओल्ड टीवी सेट once in a while from a family is not a business activity, but the same TV sets are sold by a electronic shopkeeper, then that will be a regular base activity and coming under the category of business. Profit earning. Profit is required for survival. अगर आप अर्निंग नहीं करेंगे तो बिजनेस का कोई पर्पज ही नहीं है. तो सर्वाइवल करने के लिए अर्निंग कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट प्रॉफिट इज ओनली एंड ओनली द मेन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस. बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा. एंड एट लास्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. बिजनेस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट रहती है, दैट इज बिजनेस रिस्क. इफ देयर इज सर्टेनिटी देन देयर इज नो रिस्क, बट इफ देयर इज अनसर्टेनिटी then there is a risk. और रिस्क जितना हाई होगा उतना ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट्स के चांसेस बढ़ते हैं और उतना ही ज्यादा लॉसेस के चांसेस भी होते हैं. सो देयरफॉर व्हाट वी टेक फॉर दिस बिजनेस, दैट बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो होगा ही. सो बिजनेस अच्छा करना है, हाई प्रॉफिट्स में जाना है, तो हाई रिस्क की पॉसिबिलिटी लेते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं
प्रॉफिट्स. अगर हाई प्रॉफिट्स होंगे तो हाई रिस्क के बाद ही आएंगे. सो अल्टीमेटली बिजनेस is overall an economic activity which involves all PPS, ES activity, and it is aimed at earning profits and giving satisfaction to the needs of the people. Thank you so much, children.